India's first actuary. He was a brilliant mathematician. He qualified as a fellow in 1926. He worked for a life insurance company, but he was also involved with education. He taught actuarial science at Sydenham College in Mumbai. He conducted India's first mortality study, and he repeated that again 10 years later, and his papers were published in the Institute of Actuaries, UK. So he had a significant role in the insurance industry in that he also acted as India's superintendent of insurance. Later on, he became the managing director of LIC when it was nationalized. But most significant of all, he was involved with the drafting of the Insurance Act 1938, and that Insurance Act 1938 is still the core of what is the new Act of 2025, the Sabka Bima Sabka Raksha Act 2025. So what we have to admire is that this was almost 100 years back, and we don't know what were the resources which were available, but with this sheer brilliance and this sheer hard work and his initiatives, he achieved what he did, right? And this is really, really inspiring for us. And his legacy reminds that every profession has such trailblazers who kind of lay the trail for us, and it's for us to carry it forward. So it's now upon us to continue, and upon you, the young actuaries of the future, to uphold the standard and leave your mark on the profession. So today the actual profession has grown significantly, but every time, they're always focused on rigor, integrity, judgment, and also balancing short-term perspectives with long-term perspectives, because whatever decisions we take have a lot of significance on the well-being of individuals. Our theme this year, one profession, endless possibilities, infinite impact, reflects both the breadth of our profession and the contribution we can make towards and make in the years ahead. So I hope this evening gives us an opportunity to celebrate our profession, remember the legacy on which it has been built, and look ahead so that we can contribute together. So on behalf of the Institute of Actuaries of India, I extend a very warm welcome to all of you. Thank you for joining us, and wishing you all a happy Actuaries Day. Thanks. Once again, welcome and thank you for being a part of this memorable occasion. It is said that without the pillar of support, that is the coach, even the greatest teams fail to bring out their potential. The same can be said for our strength and our very own guiding light, the President of the Institute of Actuaries of India, Ms. Preeti Chandrasekhar. Ms. Preeti Chandrasekhar is the first elected women president of Institute of Actuaries of India, with nearly 35 years of experience across insurance, pensions and consulting. A highly respected actuarial professional, she has marked extensively in the areas of employee benefits, retirement solution, risk management, actuarial valuation and pension consulting. Over the course of her career, she has advised a wide range of organizations on complex actuarial and business challenges. As President of Institute of Actuaries of India, she is committed to advancing the profession, strengthening stakeholder engagement and enhancing the contribution of actuaries to business, society and the public interest. Please give her a huge round of applause. Namaskar and a very good evening to all of you. On a day devoted to the profession, it seems fitting to begin with a line from the Vishnu Purana that has guided Indian thought for centuries. It goes as follows: Sa vidya ya vimukyate. What does it mean? It says that alone is knowledge which liberates. Because knowledge, the tradition tells us, is not an end in itself. It is meant to liberate. What does it mean for us? It means to liberate a farmer from the fear of an unpredictable monsoon,
to liberate a gig worker from the anxiety of an accident with no safety net beneath, to liberate a nation from planning its future on guesswork instead of on measured, disciplined foresight. And that is exactly what actual science has always offered the world. I extend warm welcome to every member of this profession gathered here to celebrate Actuaries Day. Our fellows, our associates, and our students who are still finding their footing amongst the actual tables and the examination hall, and our senior colleagues who built the foundations we now stand on. I also warmly welcome our friends from the regulatory and policy community, media friends that I see here who joined us, and Dr. Prusti, the Additional Secretary at the Department of Financial Services. Sir, your presence is a reminder that this profession does not exist in isolation. It exists in service. Actuaries Day is not simply a calendar observance. As Asha mentioned, we do mark it as the birthday of our very first actuary from India, Shri L.S. Vaidyanathan. But it is also a moment where each year, where we step away from our actuarial models, our valuations, and ask a larger question. What is this profession actually for? And our theme, One Profession, Endless Possibilities, Infinite Impact, is very, very well aligned with this thought. This theme this year was chosen deliberately, and I want to spend a few minutes explaining why. One profession, that's the first part, is about collaboration. We talk of life, general insurance, pension, health, banking, risk management, enterprise risk, etc. They're not separate professions wearing the same badge. They're one discipline of thought applied across many terrains. The actuary who prices a health portfolio and the actuary who models pension decumulation are drawing from the same training and expertise, the capacity to see risk before it materializes and to design for it in advance. Second part of the theme is endless possibilities. This is about innovation. Actuaries today are shaping climate risk models. Wait! Still! Hold it, sir. एक्चुअली ये लोग लाइट मारनी चाहिए ना. अरे लाइट्स तो मारो. अरे लाइट बोलना चाहिए ना दादा आपको. बोल के क्या करो आप लोग बोलो. इवेंट है ना. अरे आप इवेंट कर रहे हो तो बोलो. काय झालं लाईट स्टेज वर लाईट नाही ना. लाइटच नाही अरे काय बाबा लाइट तो मारो कम कर. उसके ऊपर खा ले लाइट जाने दो ना. टाटा जो है वैसे ले लो. वो कैदी से काट दिया ना. वो ये लोग ने बीच में आ गए. आने दो जितना मिलता है. कटिंग वाला नहीं मिला था. वो आगे थे ना. तो बोलने का ना होल्ड करना है. फ्रंट सामने. अरे लाइट सी नहीं है फेस पे. देखो ना. ओके डन. थैंक यू. डन डन. उतने दिनेश को गड़बड़ बनी. And with that, we are pleased to announce the launch of the certification program on carbon credits and carbon markets. Registration for the program will open on 25th August 2026. Thank you. Applause, audience.
Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. हमारा टाइम हो गया A huge round of applause as the cake ceremony happens. Sir, please. बोले पैकअप कर रहे सर हो गया हेलो 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 नहीं बाहर बाहर नहीं यहाँ से करो यहीं पे बैकड्रॉप है I think this is how a perfect evening looks like. बोले जल्दी Yeah, there is नेक्स्ट टाइम फुल हो जाएगा होना चाहिए. That's the Nature event of the Institute of Actuaries of India. So I have both honor and the pleasure to announce that the 26th Global Conference of Actuaries and ACFA 27 will be held from 1st March to 3rd March 27 at the Westin Mumbai Powai Lake, Mumbai. The Global Conference of Actuaries has become a key platform for our profession to deliberate on the developments shaping actuarial practice, the industry and the wider economy. The 26th edition will continue this tradition, bringing together actuaries, industry leaders, policy makers, academics and my apologies, and other stakeholders for substantive professional dialogue. We look forward to welcoming the actuarial community and those who interact with actuaries from across the industries to Mumbai in March 2027 for another significant edition of the GCA and ACFA 2027. Look forward to seeing all of you in large numbers at GCA and ACFA 27. Thank you. A heartfelt congratulations to the whole Actuarial Society present over here. And understanding of the evolving carbon market landscape. It covers the foundation of international climate governance, including the UNFCCC, Kyoto Protocol and Paris Agreement, and extends to the functioning of key market mechanisms such as Perform, Achieve and Trade (PAT), energy saving certificates, ESC cert, ES certs, CORSI, Corsair, and carbon trading and future markets. What makes this program particularly valuable is its practitioner-oriented approach. Through numerical exercises, case studies, and discussions on the opportunities, risks, and limitation of carbon markets, participants gain both conceptual understanding and practical insight. The program is relevant for actuaries, finance and risk professionals, ESG practitioners, policymakers, and students seeking to build expertise in a rapidly evolving domain. This initiative reflects our shared commitment to strengthening professional capacity. Hi, first of all, congratulations आज जो ये IAI
क्या नई लॉन्चिंग हुई है, क्या नए मुद्दे आज बताए गए? आई थिंक ये हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। हमारे प्रोफेशन के लेगेसी एंड हिस्ट्री को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम हम आगे फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी हमने काफ़ी चर्चा की है आज। हमारा प्रोफेशन आज ऐसे मोड पे है कि हमारे जो स्किल सेट्स है वो अप्लाई किए जा सकते हैं, खाली इंश्योरेंस में नहीं बट काफ़ी सारे दूसरे क्षेत्रों में भी, जैसे बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, क्लाइमेट रिस्क हो गया, एंड जो स्कोप एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे प्रोफेशन के लिए वो काफ़ी बड़ी है एंड खाली इंश्योरेंस एंड पेंशन तक लिमिटेड नहीं है। तो हमारे जो मुद्दे आज बात किए गए थे कि कैसे हमारा प्रोफेशन और ग्रो कर सकता है एंड खाली इंश्योरेंस एंड पेंशन रिलेटेड ग्रोथ ना हो, इट कैन बेसिकली वो ग्रो कर सकता है कोई भी डिफरेंट एरियाज या इंडस्ट्री में। आई थिंक ब्रांड बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रांड बाइबल के कॉन्सेप्ट की वजह से हमें एक चीज़ एस्टैब्लिश हो रहा है कि हमारा प्रोफेशन एक है। हमारे प्रोफेशन के एक्चुअरीज डिफरेंट एरियाज़ में काम करते हैं, थोड़े इंश्योरेंस में करते हैं, थोड़े हेल्थ केयर में करते हैं, थोड़े बैंकिंग में करते हैं, हर एरियाज़ में काम करते हैं। बट हमारा ब्रांड बाइबल का थॉट प्रोसेस ये है कि सब एक्चुअरीज एक ही भाषा बोले, एक ही सोच समझाए एंड आप पूरा प्रोफेशन एक जगह पे एंड एक यूनिटी के साइड से सोच रहा है। तो हमारा जो ब्रांड बाइबल है उसका कॉन्सेप्ट भी वही है कि हमारी सोचें अलग हो सकती है बट हमारा थॉट प्रोसेस एंड फिलॉसफी एक है, एंड वही ब्रांड बाइबल का थॉट प्रोसेस है। थैंक यू। ये आप सोच लीजिए कि ये हमारे प्रोफेशन का जन्मदिन है, ठीक है, तो हम उसको वैसे ही मानते हैं और हर साल नई चीज़ें होती हैं, हर साल हम लोग कोशिश करते हैं और नया करें। और अभी आपका सरकार ने विकसित भारत के बारे में भी बोला है, तो उसमें हमारा योगदान बहुत होगा ऐसा हम मानते हैं। और आपने गवर्नमेंट के DFS के असिस्टेंट एडिशनल सेक्रेटरी की भी बात सुनी, that is also very encouraging to see that there's going to be a lot of scope for the profession going forward. इंश्योरेंस पेंशन तो कोर डोमेन है, उसको छोड़ के भी उससे आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हमको। हाँ, तो देखिए बच्चों के लिए तो ऐसा है, अगर और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो बच्चों को भी आजकल चाहिए कि नई नई चीज़ें सीखें। अभी आपने सुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल डोमेन्स में हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, बट जो नई चीज़ें आएंगी एंड एक्चुअरीज़ को हमेशा अनसर्टनिटी बहुत अच्छी लगती है। हम लोग को ऐसे नहीं लगता कि रिस्क है तो अवॉइड करें, वी थिंक ऑफ रिस्क एज एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर जैसे जैसे आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आपको उनको ऑब्वियसली दे विल गेट मोर चांसेस टू होन देयर स्किल्स, देखेंगे कि क्या क्या और एरियाज़ में वो लोग काम कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। हमारी तरफ से तो एक तो है, आपने आज तो देखा हमारा ब्रांड आइडेंटिटी वो तो हुआ, और बच्चों के लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया जिसमें यू आर एबल टू गेट देम लिंक्ड, तो उनको भी ऐसे फिर एनकरेजमेंट मिलेगी कि ठीक है, ऐसे नहीं कि खाली पढ़ रहे हैं, नौकरियां भी हम लोग आर हेल्पिंग देम आउट। तो वो तो अभी के लिए है, बट आगे के लिए जैसे एडिशनल सेक्रेटरी सर ने बताया, हमारा एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज कर रहे हैं हम टू गेयर अप विद द न्यूअर थिंग्स। ESG के बारे में आपने अभी कार्बन का वो सर्टिफिकेशन भी देखा, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें हम लोग अपनी तरफ से वी आर फैसिलिटेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द students, not just students, for all of us, people like us who actually already qualified many years back. हमारे लिए भी सीखने के लिए तो कोई उम्र नहीं होती है, हमेशा सीखते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए AI विल चेंज द वे वी डू थिंग्स। पहले जैसे हम लोग से भी पहले जनरेशन में वो लोग हाथ से कैलकुलेट करते थे, ठीक है, फिर उसके बाद ये आया, आपका कैलकुलेटर आया, तो लगा अरे कैलकुलेशन एबिलिटी ख़त्म हो गई। बट आपको क्या डालना है, क्या देखना है, उस आउटपुट को समझना कैसे, वो तो आपका
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए उसके लिए। उसके बाद कंप्यूटर्स आए तो सोचा कि चलो ये बंद हो गया, फिर एक्सेल आया तो सोचा वो भी बंद हो गया। तो ये सारा अगर करते रहोगे तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हमें उसके हिसाब से अडेप्ट करना है। तो हमारा करने का तरीका चेंज हो जाएगा, जो हम काम कर रहे हैं उसका तरीका चेंज हो जाएगा। पर उससे ये भी होगा, अगर आपको AI से सहूलियत मिलती है कि कोई नई नई अलग अलग चीज़ें करें, दैट विल फ्री अप योर टाइम टू डू अदर थिंग्स विच, जैसे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकते हैं। जैसे आज ये लोगों ने बताया कंज्यूमर बिहेवियर समझना, आपको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स समझना, वो आप AI एक हद के ज़्यादा नहीं कर सकता। उसके लिए तो ह्यूमन बीइंग चाहिए जिसको मालूम है कि नंबर्स क्या हैं, उसका मतलब क्या है और उसका कंज्यूमर के लिए क्या मतलब है। वो तो खाली ह्यूमन इंटेलिजेंस ही कर सकता है ना। ऐसे बेनिफिशियल हो गया, दैट्स अ प्लेटफॉर्म। अभी तक क्या होता था, हम लोग के पास था, लोग अपना एडवर्टाइज करते थे हमारे वेबसाइट पे और वहाँ से फिर लोग अप्लाई करते थे। अभी क्या है, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ठीक है आई हैव क्लियर दिस मैनी पेपर्स, मुझे ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट है जॉब करने में। उधर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इंटरेस्ट है, तो कहीं पे दोनों को मिलाने की बात है, तो फिर वो तो जॉब पोर्टल कर रहा है। जो एडवाइस, ओके, आई कुड नॉट हियर द क्वेश्चन। हाँ, सो व्हाट एडवाइस टू द यंग स्टूडेंट्स। आप बहुत चीज़ें सोचेंगे, सुन रहे होंगे कि AI है, उससे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, उससे नौकरियां नहीं मिलेंगी। I will say that the nature of work will change. Work will still be there. It is the nature of work, and what your contribution is to work will change. So you have to keep your skills current. आप बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी सीखिए, जैसे बोला कम्युनिकेशन स्किल्स सीखिए, आज पैनल डिस्कशन में बोला कोडिंग सीखिए, इंजीनियरिंग स्किल्स सीखिए। ये नहीं कि ये कोड करना है तो कोई करके दे देगा, उसको एक बना हुआ कोड उसको आप एनहांस कैसे करेंगे, उसके लिए आपको तो पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है ना। और आउटपुट कैसे समझना है उसके लिए भी नॉलेज ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए। ये नहीं कि पेपर पास कर लिया, फार्मूला आता है, फार्मूला अप्लाई किया, नंबर आ गए, ऐसे नहीं होता है। उससे आगे भी है ज़िंदगी, तो वो देखना है आपको। AI-related budgets are concerned, inside financial institutions in India, what is the kind of allocation that companies are making as far as AI solutions only for actuarial-related purposes is concerned? See, do you have a number in mind? No, I will not have a number in mind per se. But all I have to say is AI is not a technology; it is a layer, and it will be across everything we do in life. The way we do things will change. बट इट इज़ नॉट कि जैसे आपको एक नया टेक्नोलॉजी है जैसे पाइथन वगैरह, वो एक टेक्नोलॉजी है, बट ये उससे आगे जाता है। दिस इज़ अ लेयर, है ना। तो फिर दैट इज़ व्हाट आई विल लाइक टू से। Yes. So I will not have a number offhand, but definitely companies are investing in looking at ways in which AI can be integrated as a part of the work that the actuaries are doing. You tread with caution because AI के साथ बहुत और चीज़ें हैं, जैसे आपको मॉडल बायस है, हेल्यूसिनेशंस है, तो वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे उसको एड्रेस करेंगे। तो ऐसे नहीं कि you are welcoming it with open arms. We are treading with caution, but surely moving ahead from AI. How far are we from companies doing frontier investment in AI or the actuary purpose? So there is nothing called a frontier. I mean, I would not I don't think I'll comment about that frontier investment. But in general, actuarial, the investment on AI in actuarial is not just. It's not just about investment of AI in actuarial. It's about the investment of AI in the insurance industry. And actuarial is the backbone, but it's a part of the larger scheme of things. तो ऐसा नहीं कि AI investment only in actuarial, ऐसे नहीं होता है ना। So it's a holistic view that you have to look at. Thank you. Please have refreshments and go. See, India is a
poised for growth. It is going to become a 7 trillion economy in some years' time, and we need skilled people for that. And as actuaries, we have traditionally been working in insurance and pension sector, but we can actually work in other areas. We are able to model and we are able to give insightful answers. So there are a lot of industries where actuaries can work and people can make informed decisions. So we'll be able to solve the skill deficit problem which is there currently in the country, and that's what as IAI we are focusing on developing more actuaries who will be able to work across industries. I am honored to share a few thoughts on your theme, One Profession, Endless Possibilities, Infinite Impact. Actuaries Day honors the birth anniversary of the late Shri L.S. Vaidyanathan, India's first actuary. It also gives us an opportunity to look ahead and consider what the next generation of actuaries may accomplish. We are one profession because wherever we practice, we share a common foundation. We use technical knowledge and professional judgment to help people and organizations understand uncertainty and make informed decisions. We are also united by integrity and a commitment to the public interest. Throughout my career, including serving as president of the Canadian Institute of Actuaries, the Society of Actuaries, and now the International Actuarial Association, I have seen the value of learning and collaborating across borders. Countries face different circumstances, but many challenges are shared. International cooperation allows us to exchange knowledge and strengthen our profession globally. The possibilities for actuaries continues to grow. Insurance and pensions remain essential areas of actuarial work. I see more actuaries becoming closer to the business. Today I would not call us as close to the business as, let's say, an underwriter is. So I think that migration will slowly happen, where you have more business-facing actuaries, which brings about with it a lot of product innovation, which brings about with it a lot of different aspects that we would bring to the business. The second way that I see the evolving happening is with respect to the technical side of things, where actuaries will transform from being owners of the technical output to becoming translators between, let's say, a data scientist or a AI layer to the management, right? So, explaining the initiatives on achieving net zero targets. And all of us, we know that the carbon market and carbon credits discussion has come into the forefront. And as part of this particular joint certification program, we are going to cover various aspects, both from the theoretical point of view as well as from the practitioner's point of view, on various aspects of carbon trading and carbon markets. We are going to cover different fundamental concepts of UNFCCC, the joint certification program, the perform and achieve and trade, which is popularly known as your PAT market. And we are also going to take certain real life examples where companies will be able to calculate their net zero emission targets. Through this program, we intend to reach out to